Pakistan in March 2018 to 2021. And he was previously the president of the Board of Investment and Minister of State for Investment. He was also appointed as the Minister of Finance in 2013 and also elected as a chairman for the Senate Standing Committee on Finance, Revenue, Economic Affairs, Statistics and Privatization. So we have a wonderful panel with us and we are going to discuss the Dr. Ishrat book's development pathway. So this book is basically a comparative analysis between India, Pakistan, and Bangladesh, where three countries started with slightly different economic conditions, but overall they share a history. The analysis starts from 1947 to 2022. The book actually identifies different pain points and risks for the future. There are three important things that when I was realizing that Dr. Ishrat emphasized a lot. One is the policies and governance, and then he described all the process of economic development, the trajectory of development in three countries, what worked, what didn't work, and finally the social sector. So I would first of all request Dr. Ishrat to briefly tell us about the book before we start the specific conversation. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Asma. First of all, let me thank you and my two panelists, both ex-finance ministers, who have joined me, because the reason we invited both of them is that in Pakistan we have too many studies, too many plans, too many strategy papers, but where we get stuck is implementation. So these two gentlemen belong to that category where they have the capability of bringing these plans for revival of the economy to fruition. So I'm very thankful to both of them. Let me also say that this book is a joint product of myself, but along with the three PhD students from IBA Economics Department, because I wanted to give our younger generation a taste of what the policy analysis is. Because what they learn in the universities, and including IBA, is too much abstract and too much theoretical. But this exercise actually exposed them to how the policies are formulated and how the policies make a difference in the economic and social life of the country. So I'm very much proud that these three individuals actually helped me in getting both the data set as well as individual chapters, and they get the credit for each chapter. Because there are some young people here, and by the way, today's article in Dawn by Miftah has essentially captured whatever this book is suggesting. So I don't think I would need to elaborate a great deal. I will just refer you to his article. But let me say, for the sake of the younger generation, that you are all confronted today with a doomsday scenario, that Pakistan is in a very bad shape, and there is so much of despondency, and people are planning to leave the country and all that. But let me remind you, because this is not very much highlighted, and this book does highlight that, with the empirical data, not on the basis of any emotions, that between 1947, when Pakistan got independence, to 1990, Pakistan was one of the top 10 developing countries in the world. Its GDP growth, that's an income
national income growth was almost 6% per year for 40 years. Its exports of manufactured goods in 1970 were higher than those of Thailand, Philippines, Malaysia, and Indonesia. And look where those countries are and where we are today. Our per capita incomes were 70% higher than India and 100% higher than Bangladesh. Our poverty rate was much lower than that of India. India was double the poverty rate of Pakistan, and Bangladesh was even higher than that. So we had made a lot of progress. And then from the 1990 onwards, we are on a declining path, except for the period of 2001 to 2008, when we had, again, a 6% growth rate, and our exports doubled, our revenues doubled, and we had a stable macroeconomic situation. Except that period, we have a declining curve. And therefore, this study tries to find out as to what are the critical success factors which lead to this divergent path that India and Bangladesh are now very, very high growth countries. They're growing by 6%, and we are down to 3 to 4% per annum. And that is the gist of this particular study. And I would like to point out that there are some lessons which we should all, factor in. So what are the success factors? Form of the government, whether it is authoritarian, democratic, hybrid, military, democratic, doesn't matter. It is the continuity, consistency, and predictability of economic policies which matters. Hasina Wajid and, Khalda Zia have been bitter rivals. We call them battling Begums. But their economic policies were exactly the same. So the investors did not feel any hesitation in taking decisions. And unless you have investment, GDP growth doesn't take place. So they have now gone to 30% of investment of GDP ratio, and we are still stuck at 15%. India had the Narasimha Rao, who took the plunge from the license Raj, but India did not take notice, or the world didn't take notice unless Vajpayee came in, and Vajpayee continued the same policies. And then Manmohan Singh, who was the architect of the 1991 reforms, continued as a prime minister, and now Modi is actually doing much better than even Manmohan Singh, Vajpayee, and Narasimha Rao. So it's a continuity of the economic policies. Number two, there is now a political consensus that there is no ideological predilection which forms the content of economic policies. It is pragmatic economic policies which succeed. As circumstances change, you change the tune. So for 40 years, India was under the socialist regime. But then they had a balance of payment crisis, and they decided that this is not going to help the country. So what did they do? They switched over to liberalization, deregulation, and privatization, and the country took off. Number three, which is very relevant to Pakistan, is that reliance on external assistance, particularly borrowing, is a kiss of death, because the countries refuse the task of mobilizing domestic resources, and then they go around the world trying to find resources for them. But after a while, the world gets fed up that this country is just coming here only to beg us for assistance. So both for your dignity and for the country's future sake, do not rely on external assistance.
but try to mobilize your own resources. Number fourth, that this state versus market binary is an outdated concept. It is no longer relevant in 21st century. You need a strong, capable government, and you need a well-functioning, competitive private sector. And in Bangladesh case, you also need very well-committed NGOs who really brought about the revolution on the social development side in Bangladesh. So it's the working together rather than confrontation between private sector, government sector, and the NGOs. I think we have to realize that. Number five, that participation in international trade, technology transfer, capital flows, and migration do benefit the domestic economy more than if the economy was a closed economy. China is 1.4 billion people. It's a large economy. But how did they become the second largest economy in the world and the largest exporting nation? Because they opened up the economy and penetrated into the US market, which they have a trade surplus for quite some time. So we have to go for this. In Pakistan, we have a closed mind. कोई भी बात अगर फॉरेनर कह रहा है या फॉरेन है यहाँ पर, तो हम सस्पिशन की निगाह से देखते हैं उसको. Open up your minds. Try to see what is good for the country and try to adopt that. The sixth point is that investment in human capital, female empowerment, and social and financial inclusion are absolutely essential if you want a sustained, equitable growth. You can have elitist growth, जो पाकिस्तान में जो हो रही है इस वक्त वो elitist growth है. इसको majority of the population को फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ segment of the population को फ़ायदा हो रहा है. तो अगर आपने females को पढ़ाया, लिखाया, labor force में लेके गए, उनको financial inclusion के उनके access to the finances होगी, और उनको आप education and health करेंगे, you will be able to have a much better, outcomes. Seventh is on the devolution and decentralization and delegation of financial powers. 18th Amendment is very good. I have no problem with that. But it's incomplete. You have to devolve and delegate to the local governments. You have 250 million people. You can't say from Lahore that I will manage all these schools from the Secretariat. You have to empower and delegate those to each district government so that they can monitor and supervise. And finally, in today's world, digitization promotes efficiency, transparency, and citizens' access. India had big leakages in their social protection programs. Since they have digitized, all money goes to the beneficiary, and there are no leakages. So I'll stop here because these are some of the lessons we have learned from this analysis, but I'll come back to what are the pain points or what are the risks which we have to think about in the future. Thank you, Dr. Ishrat, for setting the stage and giving a summarized version of the book. So, Miftah Saab, because you have been as finance minister as well, so my question is, I was looking into the data which is provided in the book that in Pakistan, sorry? Yeah. So, one of the things that I realized from the book is the capital formation on investment. So, in 2022, the data that is available in the book, that Pakistan, the domestic formation, capital formation is 6, also the human capital. What different model we have when we have such a limited fiscal spaces? Gee, thank you so much. First of all, congratulations to Dr. Saab for bringing out another excellent book. And the first three chapters by Dr. Saab, which give you a very quick, but I think a comprehensive economic history of India, Bangladesh, and Pakistan since independence.
I mean, I think it teaches you a lot, and it's an enjoyable reading as well. मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं जो डॉक्टर साहब के पॉइंट्स थे इस पे एक दो कमेंट्स कर दूं मैं. देखें, जो डॉक्टर साहब ने एक बात करी कि मार्केट्स और हुकूमत के अंदर कोई अब इस सेंचुरी में कोई वो नहीं है कि इट्स नॉट ईदर मार्केट और द गवर्नमेंट. फिर उन्होंने कहा कि अच्छी और मैं इस तक 100% एग्री करता हूँ इनसे कि अच्छी मार्केट्स के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना ज़रूरी है. इट्स द गवर्नमेंट विच इंश्योर्स दैट मार्केट्स आर एफिशिएंट. आई मीन so you need to have and I think this is where we are lacking, because our government's regulatory arms are not as good as they should be, so they are not able to make sure that the market function. In fact, हमारे यहाँ market participants government policy को बहुत ज़्यादा capture कर लेते हैं, जिसको elite capture भी कहते हैं, और फिर वो markets को rig कर देते हैं. Fertilizer की हम कल बात कर रहे थे, एक example है कि जब हम इतनी subsidy fertilizers को दे देते हैं सस्ती गैस देके. So you need a good government to ensure that markets are well functioning, and you need, most importantly, a good court system. डॉक्टर साहब ने बात करी continued policies की. डॉक्टर साहब की किताब में डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोइंसिडेंस है कि 1990 में 1991 में तीनों मुल्क जो है वो लिबरलाइजेशन की तरफ चले गए. एंड इन तीनों के आपस में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरिलेशन हो, लेकिन 80 की दहाई के अंदर दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिस्ट ये सोचते थे कि द राइट अप्रोच टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इज़ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी. पाकिस्तान में भी एक लिहाज से देखा जाए तो इस तरह की कंटिन्यूड पॉलिसीज तो रही हैं. हम राइट्स ऑफ सेंटर ही रहे हैं 1990 के बाद. द इशू इज कि जो डॉक्टर साहब ने बात की कि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल. मतलब यू कैन गो टू अ कोर्ट एंड यू कैन गो टू कोर्ट विद सिमिलर केसेस, बट आपके सिर्फ लिटिगेंट स्टे हो जाते हैं, तो कभी कोर्ट इस तरफ रूल कर देगा, कभी कोर्ट उस तरफ रूल कर देगा. एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि द कोर्ट्स हैव टू आल्सो रूल with predictability, कि outcomes should be, you should be able to figure out कि ये outcome क्या होना चाहिए. So we have an issue with our court systems and with our government regulation that is not allowing the markets to function as well as it should. And if there were a little more strong government, I think that the markets would actually function well. So that was the one point. जो डॉक्टर साहब का जो छठा पॉइंट था HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, ये आपने भी बात की है कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज बहुत कम है. इसके अंदर इस किताब में एक अच्छी चीज़ जो है वो ये कि एक तो डॉक्टर साहब ने एक नैरेटिव बड़ी अच्छी है, सो इट ब्रिंग्स आउट द होल थिंग. बट ये जो 3 PhD स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़े टेबल लगाए हैं इसमें. दीज आर इंटरेस्टिंग टेबल्स एंड द कंपैरेटिव टेबल्स आप दे सकते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के. सो अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश के 1900 हिंदुस्तान के अंदर 1990 की उससे पहले 16% था इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, और जब से इन्होंने लिबरलाइज करा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, FDI भी बढ़ गई और हर चीज़ बढ़ गई है. सो इट इज़ व्हेन यू ओपन द इकोनॉमी आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है. और साथ साथ आप देखेंगे इनका ह्यूमन इंडस्ट्रीज भी अच्छे हुए हैं. ह्यूमन की इन्होंने नंबर 6 पे बात करी है, और ये भी जानते हैं कि नंबर 1 चीज़ यही है कि आप पहले लोगों को अगर सेहतमंद और तालीम याफ्ता कर दें तो हर चीज़ चल जाएगी. कोई मुल्क अमीर नहीं होता जिसमें लोग जाहिल होते हैं, ये नहीं हो सकता है. कोई मुल्क अमीर नहीं होता जिसमें लोग गरीब होंगे या बीमार होंगे. जब मुल्क अमीर उसी को कहते हैं जिसमें लोग सेहतमंद हों और पैसे वाले हों, मतलब कि वो अफोर्ड कर सकते हों. अगर आप 60% अगर आप लोगों को तालीम दे रहे हैं और 40% लोगों को तालीम नहीं दे रहे, अगर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी 78% ऑफ पाकिस्तानीज कैनॉट रीड, 10-year-olds कैनॉट रीड 2 sentences in any language. 78% Pakistani students 10 years old cannot read 2 sentences, age-appropriate sentences in any language. अगर ये है तो वो मुल्क तो कहाँ से तरक्की करेगा? फिर आप जो भी पॉलिसीज लेके आ जाएं कुछ भी नहीं करेंगे. सो HDI पे हमने नहीं किया. जो आपका सवाल है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्स से किस तरह नहीं कर सकते, तो आप ये देखें कि जो भी आज पाकिस्तान के हालात हैं वो उतने बुरे तो नहीं है ना जितने बांग्लादेश के 1990 में थे. जो भी आज पाकिस्तान के हालात हैं वो इतने बुरे तो नहीं है कि जितने हिंदुस्तान के 1990 में थे. सो अगर वो ममालिक जो है वो 30 साल के actually in the life of nations 30 साल is a very small period. In 30 years if Bangladesh can go up so high, if it can increase its exports since in the last 50 years by more than 100 times,
Bangladeshi exports have increased by more than 100 times in the last 50 years. If its GDP, I think, has increased by about 60 times in the last 50 years per capita. अगर ये सब कुछ हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं. लेकिन एक जो मसला मैं आखिरी इस पे ख़त्म कर दूंगा कि जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के 1990 तक ग्रोथ बड़ी अच्छी थी, 6% ग्रोथ थी, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आता था कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारी जो है वो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है. तो आप 6% ग्रोथ करके अगर 2.5% पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो सिर्फ 3.5% ही आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ा. हमको थोड़ी सी पॉपुलेशन ग्रोथ कम करनी होगी. पाकिस्तानी ख़वातीन आर मच मोर इन द लाइफ ऑफ द वुमेन. पाकिस्तान में ख़ास 3:2 का रेशो है बिटवीन बांग्लादेशीज ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वी हैव, and 3:1 का रेशो है compared to Sri Lankan women in the number of children we have. Unless and until we bring down population growth rates, there is no way we can manage this economy. अगर आपके 80 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं जो इस साल होंगे और उनको आपको 5 साल बाद स्कूल में डालना है, तो 80 लाख बच्चों को स्कूल में डालने के ना आपके पास क्लासरूम है, ना आपके पास टीचर है, ना आपके पास वसाइल है, तो उसमें से कितने बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे क्योंकि आपके ऑलरेडी 2,60,00,000 बच्चे बाहर हैं. So continued policy we need strong government to ensure that the markets work, and we need to pay emphasis on human development. Last point, sorry. And this must not be taken lightly. Ye international NGOs played a huge role in Bangladesh in gender equality and population control. और हम यहाँ पर कोई गलती से पाकिस्तान में INGO सेटअप करने की कोशिश करे, हमको यकीन होता है कि वो जो है वो तखरीबकार है, टेररिस्ट है, एजेंट है और स्पाई है. किसी मुल्क से आ रहा हो, मतलब जापान से आ रहा हो, कोरिया से आ रहा हो, हमको तो पता है कि ये मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ अभी बस कल ये बम फाड़ना शुरू करेगा. जिस मुल्क के अंदर मतलब अल्लाह की मेहरबानी से पूरा पाकिस्तान के अंदर बंदूकें चल रही है, हमको मतलब इतना जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि थोड़ा सा ओपन आवर माइंड्स, हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन ओपन आवर माइंड्स वी कैन स्टिल डू. साहब बिल्कुल आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर इशरत ने वन ऑफ द एग्जांपल दैट डॉक्टर इशरत गेव इन बुक दैट एप्पल प्लान टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग in India of smartphone by 2024. और पाकिस्तान में ये हालात हैं कि अगर कोई एक फास्ट फूड की चेन भी आ जाती है, फ्रेंचाइज आती है, तो उसको हम सेलिब्रेट करें. सो वी आर स्टैंडिंग फार बिहाइंड. बट so Dr. Ishrat, my question from you, you have mentioned, you have emphasized a lot on the institutional quality. And especially, I would give the reference at the page number 110, where you specifically mentioned that rapid industrial growth in India during 1990 to 2010 was because of the strong institutions. And also you mentioned along with that the infrastructure and the financial stability as well. So you have been at three very, very important institutions. One is you headed the State Bank of Pakistan, and then you have been to the government, and also for 2 terms you were at IBA and you as an executive director. So what is your realization, what lacks in our institution, in the anatomy of our institution, that still we are struggling with that? Thank you, Asma. ये किताब को आपने सीक्वेंस में पढ़ना होगा. मेरी पहली किताब आई थी द इकोनॉमी ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट. उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मार्केट्स को रिग किया गया है और स्टेट को कैप्चर किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ ए वेरी स्मॉल elite class, which includes you and me and people sitting here, while the majority of the population is not benefiting from the economic growth. My second book is Governing the Ungovernable. उसमें मैंने एक बॉक्स में बताया है कि अगर आपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है तो ये चीज़ें करनी है. आपने मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट करने हैं, लॉयल्टी के ऊपर और फेवरेटिज्म के ऊपर और नेपोटिज्म के ऊपर आपने नई कोई अपॉइंटमेंट करनी है. आपने उसको ऑटोनॉमी देनी है और कोई सेक्शन ऑफिसर और डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो उस काम में इंटरफियर नहीं करेगा. उसको आपने रिसोर्सेज देने हैं और
اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اس کی کہ تمہیں جو ریسورسز دیے گئے ہیں تو تم نے وہ کام کیے ہیں کہ جو نہیں کیے ہیں. اس کے بعد اس کو آپ پارلیمنٹ کے سامنے ہر سال پرفارمنس کے اوپر آپ نے پیش کرنا ہوگا, کیونکہ دس از پبلک منی, کہ آپ نے جو آپ پرفارمنس ہے آپ کی وہ پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے, ناٹ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بٹ پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سیٹسفیکٹری ہے کہ نہیں ہے. یہ ٹیسٹس ہیں جس سے انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں. اور آپ کو میں نے اس کتاب میں یاد ہوگا میں نے یہ لکھا تھا کہ فرق جو پاکستان کے ڈکلائن اور رائز میں ہے کہ ہماری پہلے 40 سال میں بڑی اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز تھیں, اور میں نے 4-5 ایگزامپلس بتائی ہیں. وابڈا نے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم بنا کے دیا ہمیں, جو کہ دنیا یقین نہیں کر سکتی تھی کہ پاکستان نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے گرین ریولوشن لے کے آئے, ہائیبرڈ سیڈز لے کے آئے, ویٹ اور رائس کا, جس سے کہ پورا ہمارا پروڈکشن چینج کر دی. تیسرا ہم لے کے آئے جو پلاننگ کمیشن تھا, اس نے جو پلانس بنائے تھے وہ ایک لانگ ٹرم پلان تھے کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جائے گا اور کیا کرے گا. چوتھا PIDC تھا. ہمارے پاس ایک فیکٹری نہیں تھی جب ہم نے آزادی حاصل کی ہے, اور ہندوستان نے ہمیں ریزروز جو ان کے تھے اس کے ان سے پیسے بھی نہیں دیے تھے. اس کے باوجود بھی PIDC نے اتنا بڑا انڈسٹریل ریولوشن لے کے آئے. اور فائنل ایگزامپل PIA کی ہے کہ PIA نے سنگاپور ایئر لائنس بنائی, ایمریٹس ایئر لائنس بنائی, مالٹا ایئر لائنس بنائی, رائل جارڈینین بنائی, اور آج PIA کا کیا حال ہے. آپ خود کنٹراسٹ کر لیں کہ ان 40 سال میں وہ انسٹیٹیوشنز کتنی مضبوط تھیں اور آج وہ کتنی ویک ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا تھا اور کس سمت میں آ رہا ہے. سو انسٹیٹیوشنز کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل, پچھلی گورنمنٹ میں بڑی خامیاں تھیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ایک پروسیس شروع کیا کہ 61 پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں اوپن ایڈورٹیزمنٹ ہوگا, پاکستان میں بھی اور باہر بھی ہوگا. اس میں ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوں گے, آپ اس میں اپلائی کریں گے. اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ شارٹ لسٹ کمیٹی بیٹھے گی, وہ دیکھے گی کہ آپ ایلیجبلٹی کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. اور پھر وہ شارٹ لسٹ جو ہے ایک انٹرویو بورڈ بیٹھے گا جس میں 2 ایکسٹرنل ایکسپرٹس ہوں گے اس سبجیکٹ کے. اگر پیٹرولیم کا ہے تو پیٹرولیم کا ایکسپرٹ ہوگا جو باہر سے ہوگا, اور وہ انٹرویو کرے گا. اور اس کے بعد 3 لوگوں کا پینل جو ہے وہ کیبنٹ کو بھیجا جائے گا. آپ یقین کریں کہ اس میں ایک بھی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ کورٹ میں چیلنج نہیں ہوئی, کیونکہ جتنی اپوائنٹمنٹس تھیں وہ میرٹ کے اوپر ہوئیں. اور 14 پاکستانی جو دبئی میں کام کرتے تھے, جدہ میں کام کرتے تھے, لندن میں کام کرتے تھے, سنگاپور میں, وہ اپنی اپنی نوکریاں چھوڑ کے آئے, اور انہوں نے آج بھی وہ یہاں موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ طریقہ شروع کر دیں, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اگلی گورنمنٹ نے آ کے اس نظام کو رکھا ہے یا نہیں. اگر یہ نظام چلتا رہتا تھوڑے دنوں میں پاکستان کی جو اس وقت انسٹیٹیوشنز کی حالت ہے وہ امپروو ہو جاتی. اگر مفتاح نے کچھ کوشش کی کہ منسٹری آف فائنینس میں اچھے لوگ کے آئیں, لیکن ان کے بعد جو لوگ آئیں ان کو ہٹا دیں اور اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئیں, تو انسٹیٹیوشنز تو اس طرح نہیں بنتی ہے نا. بالکل. سو دس مارننگ آئی واز لوکنگ انٹو مفتاز کے جو انہوں نے کام کیا. میں چاہ رہی تھی کہ کوئی غلطی نہ ہو. ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن تھوڑا سا جب میں فائنینس منسٹری کی ویب سائٹ پہ تھوڑا میں نے ایکسپلور کیا, دین آئی ریئلائز کہ آپ نے 2018 میں فرسٹ ٹائم یو واز دا فائنینس منسٹر, اور اس کے بعد شمشاد صاحبہ آئیں, پھر اسد عمر ہیں, پھر عبدالحفیظ ہیں, عبدالحفیظ شیخ, اور پھر حماد اظہر, پھر شوکت ترین, اگین مفتاح اسماعیل, اینڈ دین اسحاق ڈار, دین شمشاد اختر. اب معلوم نہیں کون ہوگا. تو یہ اگر ہمیں ہسٹری میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہم یہ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ لیں. تو مفتاح صاحب بتائیے کہ اب یہ نہیں, اگر آپ ان کا ایوریج ٹائم پیریڈ نکالیں اس 2-3 سال کا, تو ہر منسٹر کے پاس شاید 6 مہینے بھی نہیں تھے. تو پھر آپ کے خیال میں ہم نے کیا کاسٹ پے کی ہے اس کی؟ دیکھیے, ڈفرینٹ کاسٹ پاکستان بیئر کرتا ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو 3-4 وزراء چینج ہوئے, لیکن اوبیسلی حکومت تو ایک ہی تھی.
لیکن جو ایک کاسٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب حفیظ شیخ صاحب آئے تھے تو مشکل فیصلے بھی کیے انہوں نے. کووڈ کے اندر IMF نے بھی ریلیف دی, دنیا میں بھی ریلیف دی, کووڈ ہینڈل بھی اچھا ہوا اور پھر کام چلتا رہا. جو مسئلہ سچی بات ہے کہ جب کھڑا ہوا ہے وہ تب کھڑا ہوا کہ جب آپ حفیظ شیخ صاحب کووڈ کے بعد میرے خیال سے 5واں 6واں اور 7واں ریویو ایک ساتھ کیا تھا میرے خیال سے, یہ 4تھا 5واں 6واں تھا یا 5واں 6واں, 3 ریویوز انہوں نے 3 ریویوز ایک ساتھ کیے. اور وہ ریویوز جیسے ہوئے اور پیسے آئے تو ہم نے حفیظ شیخ صاحب کو واپس بھیج دیا دبئی, اور ہم لے کے آ گئے شوکت ترین صاحب کو. انہوں نے کہا میں ابھی اکانومی کھول دیتا ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ پیسے نہیں تھے, باقی تو ٹھیک تھی. تو انہوں نے یہ بجٹ دے دیا, اور جو کہ ایکسپینشنری بجٹ تھا IMF کو پسند نہیں آئی. پھر نومبر میں وہ گئے دوڑے, پھر IMF سے انہوں نے مذاکرات کرے, اس کے بعد ایک اور ریویو کیا, اور اس کے بعد فروری میں اس کے پیسے آئے. جیسے پیسے آئے تو وہ ریویو بھی ہم نے, اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے پیٹرول سستا کر دیا. پھر میں آیا. اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ اوپر عمران خان بیٹھا ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں فائنانس منسٹریز کی بات کروں. پھر میں آیا, میں پھر واپس IMF دوڑا گیا کہ نہیں بھائی آپ کی ہماری ضرورت ہے, میں پیٹرول مہنگا کر دیتا ہوں. 2-3 مہینے لگے مجھے پیٹرول مہنگا کرنے میں, اور مہنگے سے مراد ہے کہ نقصان ہو رہا تھا یہاں پہ. حکومت پاکستان نہ صرف ٹیکس نہیں لے رہی تھی بلکہ ہر لیٹر پہ نقصان کر رہی تھی. اور ایک وقت آیا تھا کہ 70 روپے ہم ڈیزل کے اوپر اور 40 روپے یا 50 روپے ہم پیٹرول کے اوپر نقصان کر رہے تھے. انسسٹینیبل نقصان تھے. بڑا رزسٹ کیا گیا, میں 1 روپیہ بڑھاؤں تو ڈار صاحب پیچھے سے رزسٹ کریں. بڑی مشکل سے 3 مہینے بعد میں نے اتنی پیٹرول کی قیمت بڑھا لی کہ حکومت کا نقصان ختم ہو گیا. IMF پھر آ گیا, پھر ہم ریویو پہ گئے, مجھے ہٹا دیا, ڈار صاحب کو آیا. مطلب پھر IMF سے پیسے آئے, اس کے کچھ دنوں بعد مجھے ہٹا دیا, پھر ڈار صاحب آ گئے, انہوں نے پھر کہا میں IMF سے بات نہیں کروں گا. تو پھر اس کے بعد 6 مہینے لگے. ڈار صاحب نے IMF سے لڑائی کری. IMF نے کہا ٹھیک ہے آپ لڑائی کریں, ہم پیسے نہیں دے رہے. IMF was not going to go default, only Pakistan was going to go default. تو پھر اس کے بعد پھر شہباز صاحب نے بڑی مشکل سے خود جا کے ڈیل کری. پہلی مرتبہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ڈیڈ دا ڈیل آف دی IMF اینڈ ناٹ دا فائنانس منسٹر. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب پیسے آئے تو شمشاد صاحبہ آئی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ نے IMF سے لڑائی نہیں کری. نہیں تو جب بھی پیسے آتے ہیں پچھلے 2-3 سال میں جتنی مرتبہ بھی پیسے آتے ہیں, پیسے آنے کے 15 دن بعد پاکستان جو ہے وہ مکر جاتا ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں, کوئی بھی وزیر ہو, کوئی بھی حکومت ہو, پیسے ملے 15 دن بعد پاکستانی مکر جاتے ہیں. یہ شمشاد صاحبہ نے نہیں کیا اور یہ بیٹھی رہی. اب یہ آپ کے پاس مارچ کے اندر دوسرا ریویو ہوگا, پھر پیسے آئیں گے اپریل میں, پھر دیکھتے ہیں میں ہم مکر جاتے ہیں کہ نہیں. سو سیریسلی IMF is very wary now of dealing with Pakistan. And نقصان دیکھیں, IMF is very wary of dealing with Pakistan because they know also that even when we sign this agreement, we have absolutely no intentions or the willingness to agree to work on that agreement, to live up to this agreement. And we have to figure out a way that we have to make the right choices to ensure that we live up to this agreement so that we never have to go back to IMF again. The only way to get rid of IMF is to actually go through an IMF program for 4 years, live up to it completely in letter and spirit, and get ourselves, our economy fixed so that we never have to go to IMF again. So that's the thing. When you're going to IMF, you're not looking for growth for the next 4 years. You're now looking to just consolidate your fiscal position. جو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار فائنانس منسٹرز کو چینج کرتے ہیں. دیکھیں ایک یہ ٹیبل انہوں نے دیا ہوا ہے پراپرٹی ٹیکس. میں نے ایک پراپرٹی ٹیکس لگایا لاسٹ بجٹ میں, جو پشاور ہائی کورٹ نے کل جو ہے یا پرسوں جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیا. 7 E's کو بولتے ہیں کہ جب آپ بیچتے ہیں خریدتے ہیں تو 1% آپ سے لیتے ہیں اگر سیکنڈ ایکسٹرا پلاٹ ہو تو آپ کا. اگر مطلب پہلا پلاٹ جو اس پہ آپ گھر میں رہتے ہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. دوسرا آپ کا پلاٹ ہو اور اگر وہ 1 کنال سے بڑا ہو یا 500 گز سے بڑا ہو پھر ہم آپ جو کہ ٹیکس لگائیں گے. اور اگر امیر ترین پاکستانی لوگ جو کہ انکم ٹیکس اوائڈ کر لیتے ہیں لیکن اپنے پیسے پراپرٹی میں رکھتے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سے تو ٹیکس لیں گے نا. تو ہم نے وہ ٹیکس لگایا تھا, وہ بھی حکومت نے قلعدم کورٹس نے کر دیا. میں آپ کو یہ ایک ٹیبل یہ ہے دیکھ لیجئے کہ امریکہ جو ہے وہ 3% آف GDP جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس میں لیتا ہے. کینیڈا 4% لیتا ہے لیکن وہ امیر ملک ہیں, ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سری لنکا جو ہے وہ 0.7% لیتا ہے پراپرٹی ٹیکس میں. ارجنٹینا 0.9% لیتا ہے پراپرٹی ٹیکس میں.
इथियोपिया 0.5% यानी कि 0.5% लेता है प्रॉपर्टी टैक्स में, पाकिस्तान 0.02, 1/5% टैक्स लेता है इन प्रॉपर्टी टैक्स। तो हमने मतलब सीरियसली मुल्क चलाने के लिए कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, राइट? अगर आपकी टैक्स टू जीडीपी 10% भी नहीं है, और नहीं है पाकिस्तान के, आपके 2 बॉर्डर या 3 बॉर्डर पे, अब तो 3 बॉर्डर पे अल्हम्दुलिल्लाह मसला हो गया है, 3 बॉर्डर पे आपके हॉट बॉर्डर्स हों या सेमी हॉट बॉर्डर्स हों, आपके पास इतनी बड़ी लार्ज एक आर्म फोर्सेस हो, आपके टेररिज्म के इतने मसले हैं, उसके लिए आपको टेररिज्म पे खर्चा करना हो, आपके स्टंटिंग का मसला है, आपके वेस्टिंग का मसला है, इलिटरेसी का मसला है, हर चीज़ के मसले हैं, आपको यू नीड मनी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड यू हैव सच ह्यूज डेट्स दैट यू हैव टू प्रीपे, सो यू कैन नॉट टैक्स। एंड it's not good to just raise sales taxes, जो कि regressive tax होता है, या even income tax on employed people, जो ज़रा से अमीर लोगों को टैक्स करना पड़ेगा। इस पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूरी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और मैं शहबाज साहब को ये कहता था कि वेल्थ टैक्स भी लगा दो, हालांकि बिफोर दैट आई वाज ऑलवेज अपोज्ड टू इट, बट नाउ आई सी सीरियसली, कल डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे NESPR के डेटा का, NSER का, मतलब you look at this data and it's mind-boggling how much poverty there is in Pakistan. I mean seriously it is unfathomable. So थोड़ा सा टैक्स हम लोगों को अमीर लोगों को देना पड़ेगा। सारे पाकिस्तान का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो चेन्नई, मद्रास, उसके प्रॉपर्टी टैक्स से भी आधा है। मेरी कैलकुलेशन ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स को बिल्कुल रिफॉर्म कर दिया और नई प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड कर दिया, एग्जेम्पशंस चेंज कर दिए, कलेक्शन बढ़ा दी, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर को नेशनल फाइनेंस कमीशन से एक पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारे अपने जो डेवलपमेंट के काम हैं और सफाई के काम हैं और पानी का और निज़ाम जो है वो अच्छी तरह से चला सकेंगे, प्रोवाइडेड यू हैव ए स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट। अगर मुझे ये पता है कि मेरे पैसे जो हैं ये कराची की सड़कों पे खर्च होंगे, मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँगा। लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि ये ब्लैक बॉक्स है कहीं FBR में, इस्लामाबाद में, ये ख़त्म हो जाता है वहाँ जाके, मैं टैक्स देने से हेसिटेट करूँगा। ये दुनिया की एग्जांपल है, फ्रॉम घाना टू ग्वाटेमाला। तो आपके लिए लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नॉट ओनली इज़ यूजफुल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बट ऑल्सो फॉर डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कि आपका जो पूल है वो बढ़ता चला जाएगा। आप सिर्फ इंडस्ट्री पे लगाते जा रहे हैं तो इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी? तो ये बड़ा अहम सवाल है कि किसने टैक्स देना है और किसने टैक्स नहीं देना है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ करोड़पति सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि 1990 में उसने प्लॉट ख़रीदा था और वो बढ़ते बढ़ते जाके वो 2000 में उसकी कीमत जो है वो करोड़ रुपया हो गई है। इस तरह से नहीं होता, आपने हार्ड वर्क करना है, एफर्ट करनी है। अगर उसने प्लॉट खाली रखा हुआ है आप उसके ऊपर टैक्स करें। दिस इज द इनएक्विटेबल टैक्स स्ट्रक्चर। सेल टैक्स आपने 18% रख दिया है। सेल टैक्स तो गरीब आदमी भी दे रहा है जिसकी आमदनी भी इतनी नहीं है, और मैं भी दे रहा हूँ। तो ये जो मिफ्ताह ने बात की ना, और इसने बड़ा अच्छा वो किया था कि भाई अगर सेकंड प्लॉट है आप उसके ऊपर टैक्स दें। तो ये पूरा रियल एस्टेट का सेक्टर जो है इस वक्त आउटसाइड है, रिटेल का सेक्टर जो है वो पूरा आउटसाइड टैक्स है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर आउट है, और जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है आउटसाइड द गवर्नमेंट वो भी आउटसाइड टैक्स नेट है। 60% ऑफ का आपकी इकोनॉमी जो है वो टैक्स नहीं दे रही है, और हम जो कंज्यूमर्स हैं वो सेल टैक्स 18% देकर अपने गुर्बत जो है वो और बढ़ती चली जाएगी। So before we open the floor for discussion, one more question, Dr. Ishrat, and also from Miftah as well. So Dr. Ishrat, you emphasized on the three and you gave a very good comparative analysis. And as I mentioned this morning to you, कि मुझे आपकी के लिए कुछ और भी पढ़ना पड़ी है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है. So I looked into literature or so one of the criticism by Ashoka Modi, I'm sure आपने उनकी book पढ़ी होगी, India is Broken, और फिर
Rajan, again, he wrote a book on breaking the mold, reimagining India's economy. Khoshik Basu ne bhi kafi criticism kiya. So how do you see, and their main criticism is that their employment is not sustainable. So maybe if you, maybe in future you can think about giving comparison with some of the other countries as well outside the subcontinent. But what is your comment on that? नहीं, मैं पेन पॉइंट्स और रिस्क में आया नहीं, लेकिन किताब में कंक्लूजन में और इंडिया के चैप्टर में पेन पॉइंट्स एंड रिस्क हैं. मैं सिर्फ एक चीज़ की यहाँ वजाहत करना चाहूँगा कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है बड़ी तरक्की कर रहा है, बट इट इज़ अ जॉबलेस ग्रोथ. सबसे बड़ा जो उनका मसला है वो ये है कि 80% ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट इज़ इन इनफॉर्मल सेक्टर. इट इज़ नॉट इन द वेज सेक्टर. और 12 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल एंटर हो रहे हैं लेबर फोर्स में. उनके लिए नौकरियां चाहिए आपको. और आपका सबसे जो डायनामिक सेक्टर है इंडिया का वो आईटी सेक्टर है. $250 बिलियन का उसका टर्नओवर है. ठीक है, 150 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं. You know how many people they employ? They employ only 5 million people. Imagine कि 12 मिलियन नौकरियां तलाश कर रहे हैं और ये आईटी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है उसमें मुश्किल से 1 लाख या 2 लाख जो बच्चे या बच्चियां हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं. हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है. दूसरा उनका बड़ा मसला है कि साउथ जो है वो देख रहा है अपने आप को ईस्ट एशिया की तरफ कि हमारा मुकाबला आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार और उड़ीसा और राजस्थान से ना करें. हमारा आप करें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड के साथ. दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. ये जो हैं ये अफ्रीका की डायरेक्शन में जा रहे हैं. इनके सोशल इंडिकेटर्स भी कम हैं, इनकी पॉवर्टी भी ज़्यादा है, इनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है. So this regional disparity in India between the northern states and the southern and the western states is going to be a major political problem in the future. So, so now we can open the floor for discussion. Please raise your hand and we can take few questions. Yeah. हेलो, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हाउ इम्पोर्टेंट दोनों से जो भी जवाब देना चाहे. मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट एट दिस स्टेज टू ओपन ट्रेड विथ, बिकॉज हमारा ईरान और अफगानिस्तान के साथ तो ट्रेड कोई ख़ास हो नहीं सकता है. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ओपन ट्रेड विथ इंडिया? इस पे जी मैंने बड़ा काम किया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा काम नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने भी काम किया है, थिंक टैंक्स ने भी काम किया है. अगर आपने इंडिया के साथ ओपन कर दिया तो इस वक्त जो 2019 की बात कर रहा हूँ, बिफोर द सैंक्शन जो हमने लगा दी इंडिया के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, 2019 में जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम था उससे 8 गुना बढ़ सकता है. पंजाब और हरियाणा इंडिया का और पंजाब हमारा ये इंटीग्रेटेड है, 1 घंटे का रास्ता है. तो अगर वहाँ पे अनियंस की शॉर्टेज होती है तो आप यहाँ से 1 घंटे में अनियंस पहुँचा सकते हैं. आपके यहाँ अगर टोमेटो की शॉर्टेज हो सकती है तो आप 1 घंटे में पंजाब से यहाँ पर शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं. आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आपकी ट्रेड बढ़ेगी 8 times. दैट इज़ अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट, बट इट इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन. आपकी फार्मा इंडस्ट्री जो है, इट्स ऑल APIs जो उनके हैं, दे आर डिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया. रॉ मटेरियल तो वहाँ से आता है, आप बना नहीं सकते, आपके पास तो बनाने की हिम्मत नहीं है यहाँ पर, ना एहलियत है. वहाँ से आप रॉ मटेरियल्स लेते हैं. और हमारे जो ये टेक्सटाइल गुड्स हैं वो हाथों हाथ इंडिया में बिकते हैं. आई वॉज एट ए कॉन्फ्रेंस और हमारी ये लॉन की दुकान लगाई गई थी. विद इन 2 hours वहाँ की औरतें जो थी एक दूसरे को खींच रही थी, वो सारी बिक गई.
So there is a potential. लेकिन जब तक के political हालात ठीक नहीं होंगे, वरना वो भी ये होगा कि अगर हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तानी माल बेच रहा है, तो RSS उसको कहेगी कि तो ये पाकिस्तान का एजेंट है, वो कभी बिजनेस नहीं करेगा पाकिस्तान से. तो जब तक कि आपका political atmosphere नहीं होगा change, उस वक्त तक हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकेंगे. इस पे मैं एक एनेक्डोट आपको देना चाह रहा हूँ कि पिछले साल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, तो यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी. तो मैंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान is willing to buy these vegetables from India because of the huge price increases. तो एक ऑलरेडी फ्लड्स आए हुए हैं, मरे हुए हैं, उसके बाद इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं. तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाया दूसरे दिन के, यार मिफ्ता तूने क्यों बयान दे दिया है वगैरह वगैरह. और उनसे लोगों ने पूछा कि फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे, तो उन्होंने कहा नहीं हम ज़रूर करेंगे ट्रेड, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान कश्मीर पे वो वापस ले लेगा जो भी इनका जो ऑर्डिनेंस था जिससे वो इंटीग्रेट कर लिया इन्होंने. तो ज़ाहिर है वो प्याज बेचने के लिए वो तो वापस नहीं ले रहे. तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया कि यार तुमने क्यों बोला है. मैं कहा सर ले लेते ना, क्या मसला है. मैंने कहा कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एनीवे. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर तुम ट्वीट कर दो, इस तरह करके ट्वीट कर देना. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मैंने एक ट्वीट भी कर दिया. वो ट्वीट हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा है. सो इंडियन गवर्नमेंट न्यू अबाउट दिस कि द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन पाकिस्तान इज सेइंग वी आर विलिंग टू बाय इट. फिर एक फ्रेंडली कंट्री के एम्बेसडर का मुझे फ़ोन आया कि हमारे कुछ लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से जा रहे हैं, तुम कितने सीरियस हो, क्योंकि तुम्हारा मैसेज ज़रा सा डिफरेंट है, प्राइम मिनिस्टर का ज़रा सा डिफरेंट है, तुम लोग कितने सीरियस हो. मैंने कहा हम 100% सीरियस हैं. मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई है. उस कंट्री के फिर जो सेक्रेटरी जो भी गए थे उन्होंने हिंदुस्तान से बात करी, लेकिन हिंदुस्तान वालों ने मना किया. उन्होंने कहा यार नहीं वो प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है और ये नहीं करेंगे वटेवर. फिर उसके बाद हम उज़्बेकिस्तान गए हुए थे शायद. तो आफ्टर डिनर आई मेट विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर. ऐसे चलते चलते मैं और तारिक फातमी साहब जा रहे थे, तो हेलो हाई करा था. तो मैंने कहा यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, तुम बेच नहीं रहे. तो उसने मुझे कहा तुम 2 या 3 दिन में देखना हम उधर से रिस्पॉन्स देंगे पॉजिटिव. मगर उन्होंने कभी नहीं दिया. सो इट्स नॉट जस्ट के पाकिस्तान भी रिलक्टेंट है, हिंदुस्तान भी थोड़ा सा रिलक्टेंट है, और वहाँ पे भी बड़ी पॉलिटिक्स होती है. सो देयर इज़ पॉलिटिक्स ऑन बोथ साइड्स. मैं सच्ची बात है कि ये नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा माशी फ़ायदा होगा. देयर इज़ नो डाउट, डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं. एंड ट्रेड का ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज बेनिफिट्स टू ट्रेड, राइट. और वही बेनिफिट लेकिन आई थिंक कि पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा होगा कि हम जिस खित्ते में रहते हैं, और अगर हम पता नहीं, हम तो ज़ाहिर है कि बेहतर जानते हैं पाकिस्तानी कि हमारा कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन अगर आपके 3 पड़ोसी हैं और तीनों से आपकी लड़ाई हो तो दुनिया शायद समझती है कि हमारा कसूर है, हमारा नहीं है. ठीक है, अगर मतलब ये 100% पड़ोसियों से हमारी दोस्ती नहीं है ना. तो अगर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए ना तो दुनिया में हम ज़रा सा आसानी हो जाती है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो एक ये रिस्क फैक्टर उसके लिए कम हो जाता है. तो इन दैट सेंस मतलब अगर दुनिया में ख़ास तौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी बड़े खुश होंगे इस बात से अगर हम इन ममालिक से ट्रेड करें. तो पोलिटिकली इट विल बी वेरी beneficial to Pakistan. Diplomatically it will be very beneficial to Pakistan to have some sort of normalized relations with at least one neighbor. So we can take 2 more questions. Yeah. Assalamu alaikum. My name is Arif Zaman from Bloomsbury Institute in London. In 2018, the House of Commons Select Committee in the UK did a report on trade with developing Commonwealth countries, and they highlighted a word which has not been heard this morning, but I think, with respect to our distinguished speakers, this is a very important word, and it's the word diaspora. And I want to ask the 2 panelists, where do you think the opportunities lie in the context of diaspora, with a very specific reference point? We're seeing the emergence of 2nd, 3rd generation diaspora, not just in London, but also in New York, and indeed elsewhere. But we're also seeing a coincidence, what was called in the House of Commons Select Inquiry, parallel potential, 2nd, 3rd generation economic policies. You talked about India, you talked about Pakistan, Bangladesh. So when we have this combination of 2nd generation diaspora communities in economic centres like the UK, US, and indeed elsewhere, together with 2nd, 3rd generation economic policies in South Asia, in the countries you've identified. What does this mean for opportunities, for entry points for the diaspora, organisations like the Organisation of Pakistani Entrepreneurs, but others as well? Thank you very much. Okay, so maybe we can take one. Okay. I think we have to distinguish between
the diaspora living in the United States, UK, Europe, Australia, Canada, from those in the Middle East. Right now, the majority of the remittances, bulk of it comes from the Middle East. And the Middle East is going in 3 to 4 years, going to be a major source of economic growth, both Saudi Arabia as well as UAE, because they are going to earn $3 trillion from the oil and gas exports, increased exports. So we have to tap that market and bring in their capital into Pakistan. But they're not from diaspora. It is from those countries which have surplus capital, and they are next to us. But our diaspora going to these countries should be more skilled rather than unskilled labor, so that the remittance per worker is much higher and our balance of payment is affected positively. As far as the advanced countries is concerned, I've lived 20 years in the United States. You have to integrate in the society. You can't live in ghettos. The Indians have learned the trick. You look at the Wall Street, you look at the deans of the business schools, you look at the academia, you look at the Silicon Valley, you look at the US Congress, they have gone and tried to influence that. So my request to my friends in these countries is, don't remain isolated, integrate yourself, attain higher positions, take part in the politics, take part in Wall Street, in the academia, and you will create a constituency for Pakistan like Indians have done that. So I have a two-track approach as far as the diaspora is concerned. सर एक छोटा सा दो छोटे से सवाल एक तो आप सिविल सर्विस रिफॉर्म और जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट की रिफॉर्म पे बहुत अच्छा बोलते हैं तो उस पर आपने थोड़ा सा आज मिस किया है दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली जो हमने यूएसए के साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला रिलेशनशिप रखा है अगर हमने मार्केट एक्सेस का रिलेशनशिप रखा होता तो क्या ये हिस्टोरिकली बेहतर साबित ना होता आज पाकिस्तान में थैंक यू यूएस के साथ मार्केट एक्सेस तो हमारी है यूएस इज आवर लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग हम सारी सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट वो यूएस को जाते हैं उसके बाद यूरोप को जाते हैं तो मार्केट एक्सेस है आपके पास बेचने को क्या है वहां पर दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क अगर आपने एफबीआर और रेगुलेटर के ऊपर बिठा दिया है उनका गला जो है वो आपने थ्रोटल कर दिया है इंजीनियरिंग गुड्स हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हम बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल गुड्स हम बना रहे हैं ये उनकी डिमांड है आप उनकी डिमांड पूरी करें आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमने तो वही टेक्सटाइल 1980 में वही थे और 2024 में भी वही हैं दैट्स व्हाई आई टेल द एक्सपोर्टर्स फॉर गॉड्स सेक go and diversify your product line cater to the demands which are coming in जो सनराइज इंडस्ट्रीज हैं उसकी तरफ आप जाएं और मार्केट पेनिट्रेट करें हम जीएसपी प्लस पे बैठे हुए हैं बड़े खुश हो रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में हमें कोटा मिल गया कोटा तो ख़त्म हो जाएगा आप अपने पाँव पे खड़े हैं वियतनाम को कोटा तो नहीं है वियतनाम कहाँ से कहाँ चला गया है तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना होगा आपने नई मार्केट्स लेके आनी होगी वो मार्केट एक्सेस है देखिए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है अगर हमारे पास अच्छे पॉलिटिशियंस आ जाएं जो कि समझें कि वाकई अच्छी सिविल सर्विस से हम फ़ायदा उठाएंगे पॉलिटिकली कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हो जाएंगी लेकिन अगर हमारे पॉलिटिशियंस ये समझते हैं कि सिविल रिफॉर्म से हमारी पेट्रनेज की जो एहलियत है कि जिसको हमने नौकरी देनी है वो डिज़र्व करता है या नहीं करता हमने अपने कंट्रैक्टर्स को डेवलपमेंट फंड से पैसे देने हैं अगर यही चलता रहेगा तो सिविल सर्विस रिफॉर्म तो वो नहीं करेंगे ना आपने उनकी पेट्रनेज ख़त्म कर दी तो 3 साल मैंने वहाँ पर कोशिश की अपनी कैबिनेट को समझाने की कि इसमें आपका फ़ायदा होगा मुल्क तरक्की करेगा और आपको वोट मिलेंगे वो कहते हैं हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे
ہمیں تو بھرتیاں کرنی ہیں اپنی مرضی کی, ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈز وہاں پر جو ہیں وہ خرچہ کرنے ہیں, ہم نے ایس ایچ او اور جو وہاں کا تحصیلدار ہے وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنا ہے, اور میں اس کے بالکل اپوزٹ سول سروس ریفارم کر رہا ہوں, تو وہ مانیں گے میری بات کوئی, although the Prime Minister was with me, لیکن کیبنٹ جو تھی وہ سارے اوور رول کر دیتی تھی. تو یہ پولیٹیکل ایشو ہے, یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے. تھینک یو ڈاکٹر عشرت. سو مفتہ صاحب, اگر ہم کنکلوڈ کریں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ابھی آنے والی گورنمنٹ کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے, ایٹ لیسٹ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس. آنے والی حکومت کو آج صبح سجیشنز دی ہے, تو میں شیملیسلی اپنا آرٹیکل جو میں نے کالم لکھا ہے ڈاؤن کے اندر آج, وہ آپ کو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیجیے گا, اس کو پڑھ لیجیے گا. یہ مطلب سیریسلی مطلب 1020 ورڈز میں اس سے جتنی سجیشنز دے سکتا تھا میں نے دے دی ہے. لیٹس ٹو ریپیٹ, لوکل گورنمنٹس ہونے چاہیے, لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ از دا لیول آف گورنمنٹ دیٹ پرووائڈ سروسز. ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, جو بات بھائی نے کی تھی کہ سول سروس ریفارمز بہت ضروری ہیں, اس میں میرٹ کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے, اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, اور لیکن جو لوگ ہمارے تھوڑے سادے ہوتے ہیں اور کام نہیں کر سکتے, ان کو کبھی کبھی آپ فارغ بھی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, ناٹ آن پولیٹیکل بیسس. اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی کنٹروورشل بات میں نے کری ہے کہ جو جس طرح NFC ایوارڈ ہے, اس طرح وفاق جو ہے وہ ہمیشہ میرے خیال سے بینکرپسی کے پاس ہی رہے گا, تو اس کو ایک مرتبہ ریویو کرنا چاہیے. اور اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک پاکستانی لوگ تعلیم یافتہ اور صحت مند نہیں ہوں گے, پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. سمپل سی بات ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. بچوں کو تعلیم دیں, بچوں کی پیدائش کی دراصل وقفہ بڑھا دیں, تھوڑا حکومت اس کے اوپر اگر کوئی 2, 5, 10, 50 ارب روپے خرچ کر لے. سپوزڈلی ہاف آف pregnancies in Pakistan are unwanted. 40% of Pakistani women of child bearing age have low iron, اگر ان کو آئرن کے انجیکشنز لگ جائیں, اگر ہم تھوڑا سا یہ کم کر دیں, لائف برتھس کم کر دیں تو آسانی ہو جائے گی. لائف برتھس کم کرنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں انفنٹ مورٹیلٹی کم ہوتی ہے, وہاں خود بخود برتھ بھی کم ہوتی ہے, بیکاز وہ نیگیٹیولی کورلیٹڈ ہیں. تو مطلب بیسک چیزیں کرنی ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سب کو ایکچولی تقریباً سب کو, سیاستدانوں کے علاوہ سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر عشرت, آپ کچھ اس پہ کرنا چاہیں گے؟ ایک اور گروہ ہے, ان کو بھی نہیں پتا, اور سیاستدانوں کو بھی نہیں پتا, باقی سب کو پتا ہے. ایک جو دیکھیں, ہمیں پولیٹیشنس کو یہ کنونس کرنا ہے کہ اگر آپ آ کے فوراً ٹف ڈیسیشنس جس سے ہمارے عوام کو پریشانی ہوگی, دکھ ہوگا, ڈیفیکلٹیز ہوں گی, وہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ چوتھے سال میں یا 5ویں سال میں ہماری جو اکانومی ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی. IMF کی طرف ہم نہیں جا سکیں گے, IMF سے چنگل کر لیں گے, اور پھر آپ جا کے ووٹرز کو کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تم سے کہا تھا کہ پینفل ہے یہ, لیکن اب دیکھو یہ آپ کو فائدہ شروع ہو گیا ہے, آپ ہمیں دوبارہ ووٹ دیں تاکہ ہم یہ سلسلہ چلا سکیں. اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ٹف ڈیسیشنز پہلے 3 سال میں ہوں گے, SOEs کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے, لوکل گورنمنٹس کو لے کے آنا ہے, پروونشل اٹانومی کے ساتھ ساتھ آپ نے لوکل گورنمنٹ کو اٹانومی دینی ہے. آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف 18th Amendment and I won't go by that. NFC ایوارڈ میں آپ نے لوکل گورنمنٹس کے لیے پیسے رکھنے ہیں, آپ نے پراپرٹی ٹیکسز کو, ریئل اسٹیٹ ٹیکسز کو لانا ہے, سبسڈیز غریبوں کو جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ دیں. آپ دیکھیے کہ غریبوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم ہوگا. تھوڑے دنوں میں انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گا, لیکن جب آپ اپنی فسکل سچویشن کو امپروو کریں گے تو آپ کا انفلیشن کم ہوگا. اس وقت آپ نے اتنی زیادہ بوروئنگ کی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو انفلیشنری پریشرز ہیں. یہ چیزیں اگر پولیٹیشنز کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چوتھے اور 5ویں سال میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پولیٹیکلی فائدہ ہوگا, اکنامکلی تو ہوگا, پولیٹیکلی فائدہ ہوگا, لیکن یہ ان کے سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے, تو ملک جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں چلا جائے گا. تھینک یو ڈاکٹر عشرت, تھینک یو ویری مچ مفتہ صاحب, اینڈ جوائن می ان تھینکنگ بوتھ آف دا پینلسٹ. تھینک یو آل.